Yo guys, I'm back again with another stream of Death Stranding director director's cut edition part 2. बहुत ही छोटा नाम है. Hope you guys are doing well. Okay, let's jump into our story. Beginning scan. Scanning bridges ID. ये कल का वापस ये Got it, sir. ठीक से सेव ही नहीं हुआ ये. Good. It seems कल भी यही मिशन था वापस से. पता नहीं क्या दिक्कत है. वापस से टोपी लाएगा, मैं टोपी पहननी पड़ेगी. पता नहीं क्या दिक्कत है. फोटो से लोचा है इसमें. good work. टोपी पहना दी इसने. Sam, managed to get that bonus, huh? Wear it with pride. और कुछ करना है चार वगैरह. नए नए करके निकल जाते हैं इसको. नए नए भी कर लिया लेट्स गो. Take on a new order to the station west of capital North City. हाँ अच्छा. वापस उस जगह पे जाना है. कोई नहीं. Just a moment guys.
I'm back. Beginning scan. Have a pleasant journey. तो कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐसे यूज नहीं कर सकती क्या? ऐसे कार वगैरह सामने है तो सही है, या फिर आगे कोई ऐसा मिशन में यूज होगा? ये थोड़ा बस इस चीज़ है। या फिर अंदर से कुछ अनलॉक है तो कुछ लॉक्ड है तो Have a pleasant journey. अंदर से कुछ करना है। Always like the quiet. सामान देने है तो ये चीज यहीं से ओपन तो थी। हाँ ये वाला ये ओपन था, ये कुछ डोर अभी क्लोज है। सभी व्हीकल ऐसे लो। ये क्या है? सर्कल किस चीज की? Sam. इसका मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ। ये नेट का स्पीड का कुछ लोचा है क्या? ठीक से बता ही नहीं कर, कोई ठीक से गाइड ही नहीं कर।
एक ने मोनोरेल का जैसे भी थे, बस बाकी बोल रहे कि गैराज में Welcome to capital not safe. बस ऐसे वीडियो बना रहे थे, पर मेन कहाँ से उनको मिला वो सोर्स वगैरह नहीं पता। Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. इसमें तो मोनोरेल का ऑप्शन ही नहीं है। चल के ही जाना पड़ेगा, फिर सर्च कर लेता हूँ। अच्छा है, इसमें बनाना पड़ेगा इसमें। ओके भाई, ये स्टोरी प्रोग्रेशन में आगे आगे कुछ ओपन होता रहेगा, Beginning उसके scan. हिसाब से Have a हम pleasant बिल्ड कर journey. सकते हैं। अभी तो ऐसे चल के ही जाना पड़ेगा। Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. ये क्या बता रहा है रेजिंग?
एक और यहाँ पे बता रहा ये रहा। काफी मतलब बड़ा ये स्कैन कर लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जो ब्लैक ब्लैक ऐसे निकलते दिख रहे हैं ना वो बीटी एरिया। हाँ इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन क्या बोल रहे हैं इसमें वो डेथ वाला है ना, डेथ वाला एरिया। इन्फेक्टेड एरिया। मुझे इस गेम प्ले में इतना तो इसका पहले देखा था मैंने, अब इतना डरावना ऐसा नहीं लगा कि ऐसे पीछे बड़ा है, ऐसे थोड़ा ऐसा सर्वाइवल जैसा लगा, ऐसे डिलीवरी करेगा ये सब ये गेम में ये सब। इतना हॉरर मेरे को फील खेलने के बाद मेरे को गेम प्ले देखा था उसमें इतना फील नहीं है। खुद ऐसा खेल रहा होता हूँ जाके मेरी फटी पड़ी गई ऐसे कि पीछे पड़े हैं, इनसे बचना है डेथ वालों से। गेम प्ले देखना खुद खेलना बहुत ही फर्क पड़ जाता है। देखने में तो सब ऐसे इजी ही लगता है। यहाँ पे मैंने अपना वो प्लंजर लगाया हुआ था। ये रहा। Always like the quiet.
Sam Porter Bridges. एक लेटर आ गई है क्या? सीसी हो गया। इसका क्या काम है? मुझे लगा ये रेजिन है। अच्छा ये तो रिसोर्सेज है कुछ बिल्ड करने के लिए। तो फिर इसको प्राइवेट लॉकर में डाल देते हैं। मुझे लगा उसको रिलीव करना है टेक ऑन ऑर्डर्स। To build a post box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. ओके ऑलरेडी है हमारे पास रिसोर्सेस, दिक्कत नहीं है, बिल्ड कर सकते Order हैं। assigned. Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. Weapons restrictions lifted. यहाँ पर भी रेजिन मिली। इस एरिया में बिल्ड करना है, जो पैरल वाला है यहाँ पे एरिया पूरा। बारिश भी चालू है। Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. When you're ready to proceed, activate your PCC. Use it to build a post box within the area I specified.
अच्छा है ऐसे ये वाली जगह से ये क्या है ये कौन सी टेक्नोलॉजी भाई बस इसने ऐसे फेंका और ऐसे खड़े खड़े पोस्ट बॉक्स बन गए बोल रहे हैं ना कि एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा बिल्डर की भी जरूरत नहीं है एआई का है सचमुच में इनकी जॉब ले लेगा Good work, Sam. That's a fine looking post box. If you access it and select Share Locker, you can share cargo and equipment with you. इधर प्लेयर तो इसमें है ही नहीं वो प्लेन ही खेल रहा हूँ शेयर करने का मतलब ही नहीं है चलो ये बिल्ड हो गया फिर वापस जाके दूसरा ऑर्डर लेना है। अचानक कैसे फिसल गई Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Order assigned. इस तरफ जाना है ये नदी क्रॉस करके अब तो काफी कुछ नया एक्सप्लोर करना पड़ेगा फिर लॉन्ग जर्नी होने वाली Restrictions lifted.
stumble across any memory chips on the road, be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Verifying ID. Clear. All weapons. अच्छा इसने बोला टर्मिनल में दे दिया करो All इसको clear. और मैं नज़दीक नहीं है Sand Porter Bridges. देखते हैं इसमें से क्या मिलता है शेयर मेमोरी चिप डेटा देखते हैं क्या होता है इसमें Oh, this will be right at home in my collection. Thank you for your contribution. इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा इससे यही होगा एक ही होल्ड वाला बटन था बाकी एक स्प्रिंटिंग के लिए होल्ड तो सही है दौड़ने वाला तो होल्ड करके ही हाँ मैंने चेंज किया तो इसका एक्सपेरिमेंट तो करते हैं इसका ये होल्ड वाला वो है नहीं ये अलग ही कुछ है वो अलग कुछ होगा ऑप्शन पता नहीं आई थिंक ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होल्ड वाला ऑप्शन होगा उसमें Weapons restrictions lifted. और किस चीज़ का अच्छा वॉच टावर से ही Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. ये सभी इसमें बहुत है एक मिनट वो लोग कौन है वो एलियन है ये या फिर दूसरे प्लेयर्स हैं मुझे अटैक करने आ रहे हैं मेरे को ये क्या बात है भाई इसमें ये सब नहीं पता था कोई और ऐसे अटैक करने भी आता तो भागना पड़ेगा
अच्छा है इसका स्प्रिंटिंग है, स्टेमिना कम नहीं होता। काफी अच्छा स्टेमिना है इसका। एक मिनट, ये कौन है? बच गया मैं ऐसा कुछ? तो उनके फट गई ऐसे डेथ वालों से, आई थिंक ऐसा ही लग रहा है। Mules gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. अच्छा वो लोग भी ऐसे फटते ही उनसे, रेनिंग के कारण वो वापस चले गए। मतलब ऐसे दूसरे प्लेयर्स तो नहीं लग रहे, तो एनपीसी सी है मतलब इसमें। मतलब गुंडे समझ लो ना, कोई ऐसे पीछे पड़े। तो उनको पकड़ते क्यों नहीं है ये लोग? कि गवर्नमेंट कर क्या रही है फिर? पीट के एकदम सीधा कर देना चाहिए ना उनको। ऐसे परेशान करते रहेगा तो फिर एक रीजन मिल गया। ओके इस एरिया में ज़्यादा है। यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। अरे पकड़ लिया। भागना पड़ेगा। अरे गिर गया, सामान गिर गया सब। थोड़ी देर होल्ड करते हैं। आगाज हो गया मेरे से।
आई थिंक वो पानी में नहीं आ सकते। ज्यादा ऐसे होल्ड करूँगा तो बीबी को लोचा होगी। बारिश की बूंदें भी एकदम काले काले ऐसे गिर रही है। जैसे तैसे बचा हुआ है, बट कार्गो की माँ बना हुई है उनको। क्या डैमेज हो गया कार्गो। Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. बेबी को पता नहीं कुछ लोचा हो गया, सांस नहीं ले रहा ठीक से। वहाँ पे जाके इलाज करना पड़ेगा उसको। When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying weapons restrictions lifted. Beginning scan. अरे बाइक यहाँ पे अवेलेबल है। Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until weapons restrictions lifted. Sam? अच्छा इसको चार्ज करना Mike's पड़ेगा। auto-charging unit's busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Clear. Okay. Weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. उसको चार्ज करना पड़ेगा, जनरेटर की जरूरत है। बेबी को लोचा हो रहा है, जल्दी Way station folks told me all about you. Sam Bridges,
With the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome. When he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? New strand established. Okay. Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. देखते हैं इसके रिसाइकल में क्या मिलता है। Thank you for your continued support. Thank you for your contribution. Your work is greatly appreciated. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother?
Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A steel mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a steel mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a steel mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the steel mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. अपडेट हो रहा है. Returning Bios the update baby हो रहे हैं to the इसके. womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. बच्चे के भी बायोस अपडेट होते हैं. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. बिना तकिए के ऐसा थोड़ा तो ऐसा पतला तकिए तो रखेंगे ऐसे. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard, still not chained up, still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope.
I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. पहले मस्त एनर्जी ड्रिंक ठूसेगे फिर इसको जूम करके इसके बकचोदी कर टॉयलेट यूज करके मेरे को गैस अभी लेके शावर का ऑप्शन ही नहीं है अरे भागने के बाद हाथ तो धोए ही नहीं इसने अब जाकर पूछेंगे शावर Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results so far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Chirelling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, oh, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information.
such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. क्या करना और बावर तो हो गया This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is the woman in the mask who's done nothing but lie to me. Sam, there's something I forgot to tell you. It's about managing your BB stress levels and reducing the risk of autotoxemic attacks. There are a few things you can do if your BB starts showing signs of distress. Such as? Such as take a moment to look after it. Cradle the pod, gently rock it, that sort of thing. Out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know, after all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you.
Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. तो पीसी से कोई नहीं, इतनी जगह तो नहीं रोक रहा है। Let's go, guys. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. अरे बाइक का वो रिचार्ज है इसका जनरेटर। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. बाइक का बैटरी का वाटर। Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. बैटरी कहीं से लानी पड़ेगी। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. बैटरी बनाने के लिए भी तो प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर लेने के लिए तो जा रहे All clear. Weapons restrictions. प्रिंटर का ही तो लोचा है, कुछ फैब्रिकेट ही नहीं कर सकते। Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. प्लीज अटैक कर लेना को। ऑफिसर बकचोदी है इसमें। तेरे को बस स्टेल भी करना है। एकदम व्यू दिख रहा है नहीं प्लीज। टेक्सचर वगैरह सही है। ये सी आदि को मील स्कैनर भी है यहाँ। Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise.
एक बार इससे फाइट लेके देखते हैं, मार पाते हैं हम क्या है इसको। ओ बड़ी तो चल गया, ओ बड़ी तो ये Find बनेगा। somewhere to hold up. Look around and trust your instincts. वो दूसरे भी अभी लीडर आ गया उनका। ये नहीं। क्या म्यूल बनेगा रे, और आ रहा ये लगती है। ओ बड़ी तो चल के, ओ बड़ी तो लेट्स गो। ये तो बड़ा इजी पीजी था इनको मार। Been busy? Seems all the mules in your vicinity have been incapacitated. मुझे लगा एकदम खतरनाक हो गया, मार मार के मेरा भूसा बना दे। अरे साथ में ही क्या, ये क्या ग्लिच है, एकदम मैग्नेट की तरह ऐसे खींचे चला है। कुछ ग्लिच है या इसमें ऐसे करना क्या है। नियर बॉस बॉक्स, अच्छा बॉस बॉक्स में से, इसमें से निकल। अब ऐसे कुछ फूल ही है, तो इनको रख नहीं सकते। काफी सारा सामान उठा लिया मैंने, फट के आधे में आ जाएगी। एक काम करता हूँ, उतार देता हूँ इतना सारा, लालच ठीक नहीं है। 200 मेटल है, उसको हटा देता हूँ, सॉरी 50 वाला हटा देता हूँ, बाद में आगे ले जाऊँगा। हाथ में कुछ नहीं रखना, बैलेंस भी तो होना चाहिए।
अभी ठीक है देखो। तो चलो चलेगा। ओके वे प्रिंटर मिल गया, अभी चलना है वापस। आराम से जाना पड़ेगा, वेट बढ़ गया ऐसा। गिर गई आराम से। ये आया था कहाँ से? सब उस तरफ से घूम के चढ़ गए। वहाँ से धीरे धीरे हल्के हल्के बेबी स्टेप्स लेके जाएंगे। Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. And all we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary, damn near singularity. No reason for it not to take off, but it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter. Make sure you're not him. ये बोल रहे हैं ना कि पहले ये पे सब बेच दो।
लोगों को पसंद नहीं है कि ये उनकी जॉब ले रहा है। ह्यूमन ऐसे सर्विसेज बंद कर दी सबने, सब ऐसे जॉबलेस हो गए। एक टाइम ऐसा आता ही है भाई, स्टार्टिंग में ये सब ऐसा अच्छा लगता है। ये वगैरह ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लिमिट ही होती है टेक्नोलॉजी की, सब कुछ टेक्नोलॉजी से नहीं चलता। Baby enjoyed same whistling. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. चलो ये सब रिसाइकल में डाल दिया, बहुत हल्का हो गया हमारा। थैंक यू। Thank you for your continued support. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that, and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously.
Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. That thing you're holding is a crystal collector. Now, as the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Okay, crystal collector. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals.
If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. और बचेगा कायरल क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में। लेट्स सी। इसके बैटरी कहाँ से? Restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. इसके बैटरी फैब्रिकेट वो करनी। All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. भूल ही गए। इसका रिसोर्सेस है मेरे पास। आई थिंक वो भी आगे जाके कुछ स्टोरी का प्रोग्रेशन में से मिलेगा। Beginning scan. Have a pleasant journey. अभी वो कुछ बिल्ड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। Weapons restrictions lifted. Sam, Cairo crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultradeck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. यहाँ पे बीटी एरिया ज़्यादा सेंसिटिव। Nice. ओके अब तो वापस जाना। Beginning scan. Scanning bridges. Sam, Cairo crystal deliveries are a little different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any Cairo crystals you're carrying. Welcome, Sam Porter Bridges.
Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Oh, before I forget, this is for you. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Be seeing you. There is a correlation between elevated chiralium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. एक तो ऑलरेडी टोल रैक में बेकार है।
कितना लोड होता है देखो। कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है। Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Weapons restriction. Is lifted. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. क्या बात है, ऐसे मटेरियल ऐड कर दिया और ब्रिज भी बन गया। तो बोले ना ये जॉब ले लेगा तुम्हारी, इंसान की जरूरत ही नहीं है। बताओ जी, खड़े खड़े 10 सेकंड भी नहीं है, ब्रिज बन गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. तो अब क्या मिशन है? तो वापस वहाँ पे ऑर्डर लेने जाना। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Sam, got a new order for you. Another...
Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट है तो देखते हैं इसको चार्ज कर सकते हैं। Weapons restrictions lifted. अच्छा ये तो इसके लिए है। तो मतलब बाइक पे इसे लगाने के लिए बाइक ही यूज नहीं हो रहा। इसकी गाड़ी में just a moment guys. एंटी एलाइजिंग का क्या सिस्टम है? टूटी टूटी लाइन क्यों दिख रही है? हाई ग्राफिक रखा है इधर भी, वेरी हाई पे तो अभी ठीक है। एंटी एलाइजिंग ऐसा खराब नहीं दिख रहा। ऐसे टूटी टूटी लाइन दिख रही थी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट के होते हैं ना, थोड़ी ऐसे शार्पनेस बढ़ा दी। नो आइडिया स्ट्रीम पे कैसा दिख रहा होगा, बट आई थिंक स्ट्रीम पे भी सेम ही दिख रहा होगा। बिटरेट तो सही रखे मैंने, क्योंकि रेजोल्यूशन के हिसाब से ठीक ठाक वैसे दिख रहा है। तो दूर से एकदम वो ये इसकी अचानक क्या ऐसे नीचे कुछ था तो नहीं, ऐसे फिसल रहा। एजिस से टूटी टूटी दिख रही थी, अभी सही है। थोड़ी सी शार्पनेस कम करते हैं। Keep it up. Keep it up.
इसका डेस्टिनेशन है स्टॉप कैपिटल नॉट सिटी, क्योंकि अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे, वो कार्गो लेने का मतलब नहीं। How you doing, Sam? कहीं जगह हवा चल रही है। काफी सारा कार्गो यहाँ पे रिटर्न में ले जाएगी इसको। पहले अभी मेन मिशन कर दो। ओके यहाँ पे बीटी एरिया है।
और कितना दूर है यहाँ से? वो अभी भी 377 मीटर। ये सब मेटल हो गया, कुछ खतरनाक एरिया। इस तरफ से जाते, इस तरफ तो खतरा है। ये पूरी जगह इनसे भरी पड़ी। भागने पड़ेगा। बाल पे भी क्या पकड़ लिया इसने?
to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. कोड़े लग गए थे भाई मेरे. बच गए ऑलमोस्ट. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? भाई गोटे मुंह में आ गए थे पहुंचाने में. कैसे पहुंचे नहीं बताया. All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive, as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Good
Congrats, Sam. You're cleared to take on open orders. While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you, if you're already heading a certain way and you have room to spare, it couldn't hurt to do a little more, right? Just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good deed or two? That's a request for material transport. By helping the facility replenish its stores, you'll gain access to a greater share of the materials on site. Give, and you shall receive. अबे कौन से जाना था मुझे? नोट सिटी पैरामीटर यहाँ पे नए ऑर्डर लेना है। फिलहाल मैं भी यहाँ पर क्या है तो नोट सिटी जाना है। क्या करूँगा? कंफ्यूज हो गया। इसके पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन लेके जाओगे? अच्छा, तीनों के तीनों ऐसे लेके जा सकते। काम करता ना, ये वाला भी करूँगा, इसको पहुंचाओ और फिर लास्ट में इसको। Hey, great work. That wind farm you've brought into the network is essential for our continued expansion. Okay, अभी जनरेटर बन सकता By way है। of चलो तो फिर reward, बाइक लेके I've जा added सकते a हैं। little something to your PCC. A generator option. Generators recharge the batteries of all nearby devices. Yes, let's go. मैं जनरेटर मराने का मिल गया, फॉर्मूला। Bikes, and other battery-powered vehicles. इसको डिकंटेनमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसे काला काला हो गया। कहीं बीच में रिवर वगैरह आती है, इसमें वो अपने पाप धो लेगा। Sam, I see you've decided to take on several orders at once. If you're not sure how you want to handle them, open your itinerary via your cufflinks. There you can sort your active orders by distance from your current position. Should help you plan an efficient route.
restrictions lifted. There we go. ओके वेट लिमिट हो गई, ज़्यादा कार्गो नहीं देना। काफी सारा कार्गो है। बाइक नहीं है ना, बाइक अभी वहाँ पे बना लेगा, इसका चार्ज कर लेगी। बाइक होता तो बाइक पे भी लाद सकते और खुद पे भी। ट्रांसपोर्टेशन बस उतना दिक्कत है, और व्हीकल एक्सेस मिल जाए मज़ा आ जाए। ध्यान रखना पड़ेगा फिसला नहीं, ऊपर से हेवी वेट है।
Oh, good. Sorry, kid. इसके ऊपर ही गिरा मैं भाई एकदम पूरा. आराम से जा रहा वो पता नहीं बीच में जो पैर फिसल गया. चलो अब दिक्कत नहीं है वहाँ पर ढलान बहुत है. मैं वही सोच रहा म्यूजिक क्यों नहीं बज रहा.
baby. बीबी शांत हो गया पूरा एकदम। पानी में से निकल के जाता है ताकि वो हम पे वो ब्लैक ब्लैक था वो निकल जाए। अरे वो कार्गो भी छूट गया। अब ऐसा होता है। कार्गो पानी में जा रहा है। Hey, Sam. You could probably get that bike running again if you charged it with a generator. Why not give it a try? आ गया कार्गो आ गया कार्गो आ गया कार्गो। लेट्स गो। अब दिक्कत नहीं। वो भाई क्या स्ट्रगल किया भाई, जैसे तैसे पहुंचे क्लीन होने के चक्कर में। इसने बोला ना बाइक को जनरेटर से वो ट्राई करते हैं। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain Getting locked some until shut eye. departure. Cargo verified. Thank you. थोड़ा रेस्ट कर लेते। Oh my god. एक मिनट कार को देख के ही आता हूँ ना मैं, उसके बाद आके भी। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons. Remain on cargo verified. Thank you. बड़ा लग गया भाई, 100 किलो का ऐसे लेके जा रहे हैं। 100 kg मतलब कि यही Contaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. हेवी वेट चंकी।
Back, are you? Delivery's in damn fine shape. See you around. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Order assigned. जनरेटर कैसे करना है वो देखना। Begin scan. Have a pleasant journey. एक काम करो तो इसको रेस करवाए तो क्या बेटर रहेगा। वो तो वहाँ पर भी लोचे हो गए।
Sam. इसके खाने पीने का तो कुछ आता नहीं है, खा रहा हो ये सब। EX grenade number 0. Take a look. This is what the world looked like hundreds of millions of years ago. It was just one big continent. And do you know what this is? The moon. I'll show you the real thing soon. I promise. The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Hold one, press one, just to select a PCC, then hold to select the generator. वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ अब जगह है। बताओ ऐसे बिल्ड हो रहा है सब कुछ। टेक्नोलॉजी है। बोले थे ना ये तुम्हारी जॉब ले लेगा। खड़े खड़े जनरेटर बना दिए। हाँ रिचार्ज भी होगी। अभी मजा आएगा ना वीडियो। ये कुछ लोचे वाला है बाइक इसका। पहले तो बाइक में कार्गो चढ़ा दिया। एक मिनट बस।
डेस्टिनेशन तो मार्क कर लो। स्पीड तो इसमें ही। अच्छा अरे ब्रेक नहीं लग रहा। Stretch my legs. ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का ही। वे स्टेशन कौन सा है इसमें? अच्छा ये वे स्टेशन वाला है। Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? The legend returns. How you doing, Sam? You trying to put the rest of us to shame? Fine by me. Oh, before I forget, this is for you. ये क्या है? ग्लासेस। ओके Bye, Sam. Good work. New order available. Please access... delivery terminal for further information. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted.
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेस्ट ऑफ कैपिटल सिटी। अच्छा ये वापस बाद में वो ऐसे तो कार्गो आते ही रहेगा, हमारा मिशन कब होगा। Sam, I hate to say it, but I've got a high priority request. While this has nothing to do with our network expansion operations, it's still a major cause for concern. You can pick up the order via the terminal at Capital Knot's Western Distro Center. Let's save the detailed briefing until then. Don't delay, Sam. This one's important. सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उसको उड़ा नहीं सकता ये है। Salmon pie. That's cool. ओके बाइक पानी में जा सकते हैं, दिक्कत नहीं। ये बाइक का मैकेनिक है इसका, इसमें पता नहीं अलग ही है। रियलिस्टिक कितना फील नहीं होता। बाइक का फिजिक्स बेकार है इसमें। बाइक वही आता है इसमें। Delivering cargo. Thank you, Sam. You always take such good care of our cargo. All right then. Thanks for everything. Oh, right then. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further देखते हैं वहाँ information. कैपिटल नोट सिटी वाला है तो लेके चलते हैं ऑर्डर। Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. अच्छा ओके पानी में चला तो सकते हैं बट
ज़्यादा पावर यूज होगी और बैटरी भी ज़्यादा खाएगी, तो इस बात का ध्यान रखो, पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी। कोई ऐसे कम पानी हो इस वाले एरिया में से निकलना। यहाँ पे कम पानी, तो मुझसे रहना हो ऐसे थोड़ी। यहाँ पे जनरेटर बना लेते। ऑप्शन दे ही रखा है इन लोगों ने। Patience is a virtue, I guess. Patience is a virtue. Construction complete. वाह, वायरलेस चार्ज हो रहा है वाईफाई के थ्रू। लेट्स गो। Right on. हो गया पुलिस और ऐसे बाइक एकदम खाली खाली फील होता है, कुछ ज़्यादा ही लाइट है। ये देखो इसका मैकेनिक्स प्लास्टिक जैसा फील होता है। बाइक के मैकेनिक्स थर्ड क्लास है, इसमें फील ही नहीं हो रहा कि बाइक में ऐसा गेम में चला रहा। ज़्यादा उछलता है, किसी सरफेस को टच ही नहीं हो रहा, ऐसा फील हो रहा है। Keep on keeping on. Standing bridges ID. Verifying ID. Clear. All well into capital Knot City. Proceed to destroy. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Sam, first deliver your cargo, then you can take on new requests. Thanks for the delivery. Lightning quick as always. तो लाइटनिंग होगा ना, बाइक भी मिल गया, इजी पीजी। Thanks. Take care. Good work.
New order available. Please access delivery terminal for further information. Your work is greatly प्रेस कर ले, नए ऑर्डर बाद में देखते हैं। लेसन यस बीबी को भी काफी वो स्ट्रेस हो गई, तो वो भी थोड़ा आराम कर ले। Good morning, Sam. लो बस हो गया, अभी शावर ले लेते हैं। सनग्लासेस तो पहने पहने ही नहीं, क्या पता है। ये तो पहनना ही भूल गया था। अबे पहनना पड़ेगा ना, बाइक लेके जा रहे हैं तो हवा लगेगी फिर आंखों में से। चल के जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। Okay, now let's head out. Okay, so 3 और के ऊपर स्ट्रीम हो गया। देखते हैं स्टेटस स्क्रीन में जाके कहाँ से चौंटन में होता है। Beginning scan. Scanning पता ही था। ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo. Sam, first deliver your cargo, then पता नहीं क्या है, डिलीवर करके फिर सेव क्यों नहीं होता अपना। Thanks for तो सेव में लोचा है या मैन्युअल सेव भी नहीं कर सकते। Thanks. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. एक मिनट, ये सर्च मत हाउ टू अच्छा मेरा सिस्टम, अच्छा हाँ बराबर। सेव कंप्लीट, ओके। काफी अंदर ऐसे, इतना थोड़े ना ऑप्शन है सर, बाहर भी तो देना चाहिए सिस्टम में। देखो
यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए। इतना कौन अंदर जाएगा? टैब दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ। वापस रेस्ट करना पड़ेगा। ये तो बाबा से भी मतलब। एक सेव करने के लिए इतना सारा। ना लंबा प्रोसीजर सेव करने के लिए। इसके पहले तो ऑटोमेटिक कैसे सेव हो जाता था, जो भी लास्ट हो वैसे। अभी क्यों लोचा हो रहा है? अभी देखते हैं कहाँ से सेव होता है, कहाँ से चोंटी नहीं होता, देखते हैं। Beginning scan. Scanning Okay. bridges ID. चलो सही है। ठीक है, नहीं यहाँ से भी करके देखते हैं। बस वेरीफाई। एक सेव करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस, यहाँ से वहाँ जाओ नहीं। Okay guys, so that's it for today. Thanks for joining. Don't forget to like and subscribe if you are new to the channel. And make sure to follow me on Instagram too. See you in the next stream. Till then, khatam, tata, bye bye. Peace out.